Fine. I wanted to close that, take your volume and everything. Let's focus on the glue. But we could be starting Shumit. You know? Okay. So we'll be starting with the next chapter, that is tissues. Tissues. What do you mean by term tissues? Group of that perform a particular function. A group of similar cells performing a particular function. A group of cells which are similar in nature and perform a particular function is what I mean by tissue. One definition. Okay. Tissues are further given two types. What are two types? Plant tissues and animal tissues. Plant tissues. So we start with the first one, that is plant tissues. Now, plant tissues are broadly divided into two main types. एक क्या था नीना? क्या था? Medicine. पर किया था या नहीं किया? उसका पॉइंट हो सकता है इसकी होगा. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गया होगा ना अपना कोई? They're not. I think I've completed meristematic tissues and permanent tissues. We studied about the characteristics of meristematic tissues. They are continuously dividing and undifferentiated. Here, exactly opposite. They are stop dividing and they are differentiated. They have a small cell. They have a thin membrane, that is thin cell wall. They have a larger nucleus, no intercellular spaces, and no vacuoles. हमने ये point लिखे थे यहाँ पे. हाँ या ना? Yes. Okay. Then comes meristematic tissues are broadly divided into three types. What are three types? Based upon their position: apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. हुआ था. Well, we are meeting after a long time, so I'm just revising. Okay. So what are apical meristem? इतना पढ़ के आया दिख रहा है. क्या? Based upon the position, these are the three types. But what is the position? Apical matlab end, terminal. So if I take, it is at the root tip and shoot tip. Root ke tip pe, shoot ke tip pe, wherever the tip is present, it is basically a apical meristem. Clear? What is the function of this meristematic tissues? General function is to bring about growth. So where does the growth takes place in apical meristem? Root tip, shoot tip. So when the shoot tip grows, the plant increases in terms of height. The root tip, it will go in depth into the soil. So these are the functions of apical meristem. What is lateral meristem? Sideways. So where it is present? In the stem. Function helps in increase the diameter or width or girth of the stem. So increase the diameter of the stem. ये ऐसे बढ़ाता है. So that's what we say as lateral meristem. Again, the function is growth, but growth in terms of increasing the diameter of the stem. Here, it was increasing in terms of root tip, shoot tip, that is height of the plant or depth of the root. What about intercalary? Intercalary is nothing but where represent the internodes. Nodes. So helps in the formation of fruits, flower, branches, seeds, everything. जो plant के ऊपर आ रहा है, वो सब कुछ nodes या internodes पे ही होता है. So all that would be coming under intercalary. Fruits, flowers, branches, shoots, birds, all that would come under this category. एकदम tip of the shoot would be the apical. तो बीच में nodes वगैरह जो भी होंगे वो intercalary. Again, growth only. So all the three brings about growth as a common function. कोई doubt है? Okay, this is based upon the position. There is one more classification.
based upon their presence. We say it as primary and secondary. So what is primary tissue or primary tissues? Those which are compulsory present in the plant. Okay, irrespective वो हमेशा होंगे ही होंगे. Then let's say as primary. What is secondary? Private. Which are not necessarily present. Okay, may be present or may be absent. Pass. क्यों रह रहा? Which are present or which may not be present. Then we say it's segmented. So primary tissues are. This is a primary tissue. This is a primary tissue. What is lateral? Secondary meristematic tissue. How do we prove it? Simple. Every plant comes from a seed. Seed, when germinate, what are the two structures formed in the seed? First and shoot. So is it having apical tissue? हाँ ना, root और shoot बना मतलब apical है. मतलब every plant has a root and a shoot. So सब में present, so primary tissue. Does every plant has some or the other node, internode, leaf? कुछ तो बनेगा. तो primary tissue. Does all plant diameter of the stem increases? Mint पेंडियन की तरह बढ़ेगा. कोरिएंडर पेंडियन की तरह बढ़ता है. ये आपको सर कोरिएंडर प्लांट लिख के आया, उसका स्टेम इतना बड़ा. आई होप कोरिएंडर पता है सर, या मिंट पता है. So there the stem is not increasing in size. So what is it? Second, because उनमें वो absent. Am I clear? कोई डाउट है? चला go ahead. सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या है? तो बहुत ब्रेक के पास अजीब लग रहा है. आज तो नींद में लग रहे हैं मुझे. आगे बढ़ू? थोड़ा प्रॉपर जोर से. Good. Now we go on to the second part. What is second part? Permanent tissues. Further divided into. Okay. कुछ लिखवाया था मैंने लास्ट में? उतना ही करवाया. तो देख लो 12 बजे हुए ने लिखा होगा तो नहीं लिख पा रहा है. ठीक है, इतना तो करवा दिया था. ठीक है जी. Now meristematic tissues, permanent tissues, exactly opposite to the characteristic what we learned over here. What is the characteristic? Dividing. These are non-dividing. These are undifferentiated. These are differentiated. They are small. They are comparatively large. They are thin cell wall. They are thick cell wall. They are larger nucleus. They are smaller nucleus. Okay. They are without any vacuole. Vacuole may be present or may be absent. Interspecies species is absent. Interspecies species may be present or absent. यहाँ पे ifs and buts है, वहाँ पे नहीं. इतना समझ में आया? Now, permanent tissues are further divided into two main types: simple and complex. So, what is simple and what is complex? तो मैं आपको हिंट देता हूँ. I give you two bottles. Okay, एक में पूरा white marble है. Marbles white कलर की marble. दूसरे बोतल में जरा 5 white, 5 black, 5 blue, 5 green. Good. Simple. When the tissue is made up of only one type of cells, we say as simple tissues. When they are made up of more than one type of simple cells, simple से complex बनेगा कहीं ना कहीं. So more than one type of simple cells come together to form a complex tissue. Clear with this? Simple is further divided into three parts. Two parts. सबसे पहला protective and दूसरा supportive. So नाम से ही पता चलता है. Protective function, protection. Supportive, support. इनमें वापस
Further divided two types. Epidermis and cork. Okay, cork सुना था? का? अरे सुना था क्या? वो पूछ रहा हो. सेल चैप्टर में काय के लिए? What to discover first? It discovered a cell through the tissue known as cork tissue. Okay. अब अपनी वॉल्यूम ओपन करना. वहां पे सिंपल टिश्यू में cork लिखा है. पर नेक्स्ट पेज पे प्रोडक्टिविटी है. एपिडर्मिस लिखा है, कॉक लिखा हुआ है. मिला? ओके. मैं इसके लिए वॉल्यूम ओपन करने के लिए बोला हूं. सेकंड पेज में नेक्स्ट पेज. मिला? वहां पे कॉक जहां पे लिखा है ना, उसके जस्ट स्टार्टिंग पे देखो क्या लिखा है. कॉक ऑफ फ्लोएम. मिला? स्ट्राइक ऑफ दैट वर्ड फ्लोएम. तो आपके लेवल पे समझ में नहीं आएगा, because then you get confused with the actual phloem and this phloem. So better strike off it. See वो word strike off करना. Cork or phloem. First line in the cork cell. Cork cell. ठीक है. Shall I continue now? Okay. So now we will talk about two tissues protective में. So I think epidermis and cork tissue. Now, what do you mean by the term epidermis? Epi मतलब top, above, out. Dermis मतलब skin. So here on, above, outermost. इन सबको बोला जाता है आपका epi, above, skin. So that is epidermis. So it is the outermost layer of the plant tissue. So plant में सबसे outermost layer जो है वो है epidermis. The root has the outermost layer known as epidermis in the form of root hair as well as epidermis. Second, stem का outermost layer epidermis है जो after a time dies to form the bark, which again below that forms the pulp. फिर उसके बाद leaf. The leaf has upper epidermis and the leaf has lower epidermis. So root में epidermis सर्कुलर फॉर्म में होगा बिकॉज़ आउटर मोस्ट लेयर है. तो ये एपिडर्मिस लेयर है. दिस सेल्स वुड बी ऑल एपिडर्मिस. स्टेम में भी सेम होगा, सर्कुलर फॉर्म में निकलेगा. तो आउटर लेयर इज एपिडर्मिस. बट लीफ कैन हैव सर्कुलर ट्रांसक्रिप्शन? नो. लीफ में लीफ ऐसे होता है ऊपर और नीचे. तो क्रॉस सेक्शन में आई फाइंड इट लाइक दिस. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. सिंपल फॉर्म. अगर ये लीफ है मेरा मोबाइल, ये है अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस. Am I clear? Now how does it bring about the function of protection? Upper epidermis secretes a waxy layer in the leaf. I'm talking about leaf. Leaf में upper epidermis secretes a waxy layer known as cutin. So wax secrete होता है उसको cutin बोलते हैं. And the layer is known as cuticle. Okay, the thicker the layer means more the wax. More the wax. Can wax allow water to move out? Is it permeable to water or impermeable to water? Impermeable. It prevents the loss of water from the leaf through transpiration. So जितना ज्यादा मोटा लेयर बनेगा उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा. The thinner it is, more will be the transpiration. So now, how does it protect the plant? It minimizes the transpiration. It protects the plant from desiccation. Now, what is desiccation? Drying up. So leaves को dry करने नहीं देगा. Third, is it doesn't allow any germ or any particle to enter into it.
So that is how it protects the leaf or the part. घर पे plants है? 2-3 दिन अगर घर पे नहीं हो तो क्या दिखाई देता है? सूख जाते हैं, क्यों? So water is not there. You have gone out for 2 days. So water is not there. It builds. सूखना मतलब building. Okay. Now you can imagine that the water is lost continuously from the leaf. Okay. Banyan tree देखा है? छोटा होता है, बड़ा होता है. Okay. Imagine the leaves losing water from it. Okay. अगर waxy layer नहीं होता, तो leaf पानी तो छोड़ देते. The huge leaf, huge plant will give us too much of water. Okay. उससे plant सूख के जल्दी मर जाता है. In order to minimize the transpiration, if anybody has touched a banyan leaf, banyan का upper leaf का part देखना, थोड़ा shiny होता है, ऐसा waxy दिखता है, because it has more wax. पर वही leaf को हाथ में रखना और दूसरे हाथ में आप rose plant की leaf पर, rose plant होगा. See the difference in the color. Shining में बहुत कम दिखाई देगा. अगर rose plant छोटा है, तो उसमें waxy layer होता है, very less. because इतना water loss होगा नहीं इतना banyan tree. The bigger the plant, more is the waxy layer to minimize the rate of transpiration. Am I clear? Everybody, without it, ये हुआ protection in terms of this. अब अगर चाहे वो स्टेम के ऊपर हो या अगर वो आपके रूट के ऊपर, तो अगर रूट पे है, तो रूट क्रॉस सेक्शन में what are this part? Root hairs. What are root hairs? They are nothing but modified epidermis. वो भी epidermis का ही part, but they are single celled. ये epidermis सब single cell होते हैं because being single cell it can absorb the nutrients, absorb the water, and also protects the plant from unnecessary to entering. So again ये protection का काम कर रहे हैं. कई जगह पे और modify हो, like there are certain plants जिनमें this epidermis modified to form hair-like extensions. ये हुआ hair-like extensions root में. दूसरा, किसी ने भेंडी के लीफ को हाथ लगाया कभी? भेंडी पता है? लेडी फिंगर, ओकरा, उसके कभी लीफ को हाथ टच करना, या फिर आपका यहाँ पे भी है नीचे शायद गार्डन के अंदर, what we say not भेंडी but अजवाइन, कभी लीफ देखा अजवाइन की? करते होगा शायद, वो करते होगा. थोड़ा लीफ का टेक्सचर को आप लगाओगे, you find a hair like extensions. मतलब ऐसा स्मूथ लीफ दिखाई नहीं देगा आपको, लीफ के ऊपर से छोटे-छोटे हेयर दिखाई देंगे. So that texture is because of the epidermis. So they form hair extensions forming the part of the epidermis. Yeah, cotton देखा है? प्लांट के ऊपर ऐसा कॉटन नहीं, प्लांट के ऊपर कॉटन देखा है? तो कॉटन का जो थ्रेड्स होता है, that are also modified because seed से कॉटन बनता है ना, तो वो कॉटन के जो सीड से आते हैं, that is also part of epidermis. Am I clear to everybody? कोई डाउट है? Sure. Okay. Can you read for that paragraph for me? Epidermis. Epidermis, a peak upon the skin, usually present in the outermost layer of the plant, such as leaves, flowers, and roots. Very good. Done. Done. Where are they? Epidermis is one cell and is covered. Because is a waterproof layer, branches of stimulated by epidermis. The processes enable different plants such as small xerophyte or desert plant. Okay. Underline the word xerophytic. Xerophytic क्या होता है? What is hydrophyte? Hydro मतलब water. Those plants found in water are known as hydrophytes. Those plants found in the desert area are known as xerophytes. Then habitations के हिसाब से classified.
xerophytes में the cuticle is much thicker. Why? Because वहाँ पे already पानी की कमतरता है. Can the plant afford to lose water? So there is a thick cuticle on the leaf on the stem. Am I clear? Next. Cells of epidermis are elongated and flattened and not in any intercellular spaces. Their inner contents are similar parenchyma cells. They are living cells. Cuticle of epidermis serves to reduce water loss by evaporation from the plant surface, as well as reducing the entry of bacteria attacks. Main function of epidermis is to protect the plant from desiccation and infection. Yeah, underline the word desiccation. Desiccation is a chemistry normal appeal word करते हैं. Prevent drying. Desiccation means to prevent drying. So it prevents from drying. I don't know how many of you have seen chemistry में there is a instrument like normally होता है apparatus known as a desiccator. It's a desiccator. It's like a bowl-like structure. इसके अंदर हम पाउडर या फिर डालते हैं so that it absorbs all the water and becomes much dry and fast. तो ये desiccator होता है. जैसे अगर आपने देखा होगा कोई भी थर्मोमीटर या कोई बड़ी चीज खरीदते हो तो उसके अंदर सिलिका जेल आता है. That is why keep the things dry. तो वो इस तरह का desiccator काम करता है कि वो absorb करता है moisture और उस चीजों को keep it completely moist free. Normally आप branded shoe लेने जाओगे उसके अंदर बॉक्स के अंदर भी होते हैं, बॉटल्स के अंदर भी होते हैं. Okay, that there is no moisture in that bottle respector. Clear with this. इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर डाल के पानी. Okay, that is not good. I think everybody is clear with it. Next. The epidermis of leaves and stems of plants, unicellular and multicellular. Seeds of cotton containing the soft unicellular heads, which form the mass of cotton. The epidermis of young roots possesses long unicellular heads. Then, without that, the epidermis outermost layer है, protective in function है, prevents, minimizes the loss of transpiration in the leaf. Second, in the roots, etc., they form hair-like extensions from the root hairs so that it absorbs maximum water, prevents desiccation of the leaf, as well as prevent the entry of germs, pathogens, etc. That is why it is coming under protective tissue. Normally, सब जगह पे ये single layer होते हैं और कम जगह पे ये double layers, and it is without any intercellular spaces. Is it a living cell or dead cell? Living cell. It is similar to parenchyma. लिखा है वहाँ पे एक point है ना, it is similar to parenchyma. जब parenchyma अपन पढ़ेंगे when we do the supportive tissue. So आपको वो जरूरत नहीं है कि आपको सिंपल लिखना है कि it is a living cell. Okay, so it is similar to parenchyma मतलब it is a thin cell wall, no intercellular space. तो आप parenchyma में पढ़ोगे. कोई doubt है epidermis में? So we go on to the next part. So next tissue, cock. The cock also known as phloem. वहाँ पे लिखा हो. पर ये phloem अलग है और वो phloem अलग है. So थोड़ा confusion होता है. तो इसके लिए आपको वो word cancel करके अपन सिर्फ cock ही पढ़ेंगे. Cock मतलब यही. Okay. Now cock is the innermost layer of the bark. मतलब अगर outer layer bark है तो उसके अंदर का layer क्या रहता है? Cork रहता है. It is from this cork tissue that the first cell was discovered by Robert Hooke. Okay. अब what was epidermis leaf secreting out? Secret क्या करता है? Cutin. What is cutin? Wax. Forming the layer known as cuticle. Same way, the cork tissue also secretes a waxy substance known as subil. Okay, अचलन थोड़ा difference है. Epidermis ये था. Where was the wax secreted? On the outer layer to protect it. Okay, but cork tissue में ऐसे नहीं. Cork अगर cells है, इधर cork cells, stem के अंदर होता है cork. तो अगर ये आपका bark हुआ, तो bark के नीचे क्या है?
दिस इज द कॉक टिश्यू, मतलब सर्कल बना कॉक, ये बाहर क्या होगा, बाहर, अपने को उससे मतलब नहीं, अपन सिर्फ सर्कल पे फोकस करेंगे, सर्कल इज नथिंग बट अ कॉक टिश्यू. अब within the cork there is secretion of a layer known as suberin, a waxy substance. पर ये अंदर की तरफ सिक्रेट होता है और ना कि बाहर की तरफ. Suberin forms a layer within the cell. वो ब्लू कलर का जो लाइन है वो वैक्सी सब्सटेंस है जो अंदर की तरफ सिक्रेट करके एक ऐसा इनर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. Okay? So water would not come out. So it prevents the loss of water, okay, through the stem region. And that is what suberin does. At the same time, because it is there, this tissue is much lighter. It is much more durable, which is commercially exploited in the formation of plies. Okay? So not wood, ply बनाने के लिए काम. बिकॉज वुड तो प्लांट से आता है, पर अगर आपके घर पे गांव वगैरह जाते होंगे तो गांव में पुराने बेड होंगे, लकड़ी का होता है ना, उसको उठाने के 4-5 जन लगते होंगे. पर अभी का अपने का बेड इट्स अ थिक प्लाई, इजीली उठ जाता है. एंड दैट्स बिकॉज इट इज कॉक टिश्यू. लाइट है पर ड्यूरेबल, वाटरप्रूफ है, रेजिस्टेंट बहुत चीज इसमें. So this is all the good qualities which are required in my plant. भाई waterproof हो, light भी हो, durable भी हो, पर ऐसा भी ना हो क्या पता चला मैं बैठ गया टूट गया. Okay? सर आपका वजन कुछ ज्यादा कर दिया, इतना भी हल्का होना नहीं चाहिए. Okay? So that all characteristics makes it more better. Am I clear? Okay. Can you read from the book? Cork is the peripheral tissue of wood stem of green trees and is formed due to activity of cork cambium, a type of secondary vegetable. Okay, underline the word cork cambium. It is the activity of cork cambium. Now, what is cork cambium? Another name for lateral meristem is cork cambium. तो lateral meristem क्या करवा रहा है? डायमीटर इंक्रीज कर रहा है. अगर ये डायमीटर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे लेयर बढ़ेगा ना, ऐड, वो है कॉर्क. तो पहले the cork cambium increases the diameter and slowly this cork cambium, हमने कहा था the meristematic tissue, the movement is stop dividing. What are they forming? तो जब ये stop होगा तभी जाके cork बनेगा. So it is formed from the cork cambium. That is what it means. Am I clear? Next. It is made up of dead cells with thickness, but not intercellular space. The cell walls of the cork cells are deposited with waxy suberin. So this waterproof and helps in conversation of water in the leaves. Cork is impervious to water and gases. Okay, it is impervious, but it doesn't allow water and gases to move out. At the same time, it makes it more durable. Most important, they are dead cells because मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, डिवाइड होते 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 टाइम आता है कि स्टॉप डिवाइडिंग एंड देन दे कन्वर्ट इनटू कॉर्क. कॉर्क इज अ डेड टिश्यू. एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? अब उसके बाद जो एक और हेडिंग दिया है, व्हाट इज नेक्स्ट हेडिंग? ओके, मतलब सिर्फ घुसाने के डाल दिए. देखा जाए तो it's a part of epidermis because it's a modified part of epidermis. Stomata present on the epidermis. ये अलग से पढ़ना, okay? पर वो अभी नहीं पढ़े, do it afterwards. अभी अपन पढ़ेंगे वो है the first part, supportive. Clear? अच्छा, supportive टिश्यू में आपको लिखने का कष्ट कम करवा रहा हूँ. That is why I want you to open the volume. एक टेबल दिया मिला, एक पेज पहले तो everybody got the page? Okay. The supportive tissues are broadly divided into 3 types. What are 3 types? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. मिला? Okay. Now, चल वहां पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए. पहला
शेप, दूसरा नेचर ऑफ सेल, तीसरा नेचर ऑफ सेल वॉल, चौथा ऑकरेंस, पांचवा ओके। आपको यही बाहर है, आपको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, वहां पे लिखा है आपने टेबल बाहर कर दिया मोर देन इनफ। पर एक चीज ध्यान देना, बाहर करोगे ना तो तीनों साथ में बाहर कर, अलग 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 करने जाओगे तो रट्टा मारना पड़ेगा, साथ में करोगे तो इट इज मच इजी कंपेयर टू थ्री लाइन। वहां पे थोड़ा मॉडिफाई करना। नेचर ऑफ सेल वॉल लिखा है, उसके नीचे बहुत बड़ी जगह रखी है और ये आपका पहला बॉक्स है कैरेक्टर का, दूसरा लिखा है पैरेन्काइमा, थर्ड कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। लिखा है पहला पॉइंट क्या लिखा है, शेप ऑफ सेल, दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ सेल, तीसरा सेल वॉल, चौथा ओके। अब नेचर ऑफ सेल वॉल लिखा है, उसके बाद जगह रखिए, फिर फोर्थ पॉइंट लिखा है ऑकरेंस। तो यहाँ पे से लाइन है नहीं ना है। अच्छा जहां पे वो ऑकरेंस लिखा है ना उसके ऊपर यहां पे आप करोगे इंटरसेल्युलर स्पेस, और यहां पे वो क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस लिखा है। यहां पे आप लाइन करोगे और जहां पे देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस लिखा है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करो, ये आप अलग पॉइंट कर रहे हो, यू मेक इट अ सेपरेट पॉइंट। थोड़ा लाइन डिजाइनर है, why I use the word designer because यहाँ पे पढ़ोगे ना नेचर ऑफ सेल वॉल, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे कहीं तो लिखा हुआ है देयर इज वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। और यहाँ पे फिर थोड़ा और ऊपर साइड है नो इंटरसेल्युलर स्पेस, वहां पे मोर इंटरसेल्युलर स्पेसेस, लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस लिखा है। तो थोड़ा पॉइंट को ऊपर नीचे करके वो लाइन खींच देना, ये अलग पॉइंट पढ़ोगे। सो अब आपका पॉइंट क्या होगा, शेप, नेचर ऑफ सेल, सेल वॉल, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ऑकरेंस और 6 में फंक्शंस। पहले 5 दिए थे, अभी 6 पढ़ोगे। देन ओके, अब चलें व्हाई से यू लर्न कंपैरेटिव। अगर ये कंपैरेटिव करते हो ना तो बहुत जल्दी आसानी से समझ, you don't have to learn exact words from there as it is, but सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं the 3 types of cells in the protector supportive is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. First thing, bahad the order and the name of the tissue, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. अब दूसरा फर्स्ट कैरेक्टर क्या दिया है, शेप ऑफ द सेल, पैरेन्काइमा सेल्स कैसे दिखाई देंगे, okay? They are polygonal, round, oval, लिखा लूजली पैक्ड, छोड़ दो। अब एक एक पॉइंट पढ़ना जो आपकी बुक में लिखा है, okay? फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पैरेन्काइमा सेल्स आर ओवल, राउंडेड और polygonal, usually loosely packed, इतना लिखा है। और collenchyma में लिखना, collenchyma cells are elongated in shape, और थर्ड में sclerenchyma cells are elongated and fiber like। थोड़ा मॉडिफाई करोगे, थोड़ा एक वर्ड से, पहले इसमें लिखा है दे आर
राउंड, ओवल और पॉलीगॉनल। सेकेंड इसमें क्या लिखना है आपको, दे आर पॉलीगॉनल एंड elongated। सिर्फ वो ये वर्ड ऐड करना, पॉलीगॉनल, दे आर समवट पॉलीगॉनल एंड elongated। कॉलन कैमा में सिर्फ पॉलीगॉनल वर्ड ऐड करना, सो पॉलीगॉनल एंड elongated। तीसरे में क्या लिखा है, elongated एंड फाइबर लाइक। अब चलो ध्यान देना, आपको सिर्फ शेप ऑफ सेल लिखना है, वो लूजली पैक वगैरह जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शेप लिखना है। हाउ टू रिमेंबर दिस, राउंड, ओवल, पॉलीगॉनल, ये बाहर कर लिया। अब इसका एंड उसका आप कंटिन्यूशन है, पॉलीगॉनल पर खींचा हुआ है तो elongated, इसका एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट है elongated बट एकदम ही खींचा हुआ है फाइबर लाइक, सो इट इज मच इजियर, राउंड, ओवल, पॉलीगॉनल, पॉलीगॉनल, elongated, fiber। Clear with this? Next point, nature of cell। Nature of cell में क्या है, it is living, dead। पूरा बकवास लिखने की जरूरत नहीं, ग्रामेटिकल पार्ट आपने वो सिंपल, the parenchyma cells are living cells, parenchyma are living cells, they are dead cells, याद रह सकता है इजीली। तीसरा, सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल, दिस इज थिन वॉल। तो अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाना है मुझको, तो राउंड, ओवल और पॉलीगॉनल, ये ऐसे है। या अगर पॉलीगॉनल दिखा थोड़ा बहुत, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, they are mostly round or oval, but now children, second इसमें देखना, they are thick at corners। ये कंपैरेटिवली थिक है, पर थिकनेस कहां पे है, सिर्फ कॉर्नर्स पे। और एक कौन सा शेप में है, पॉलीगॉनल। चल ये ऐसे होते हैं, अगर ये पॉलीगॉन है मेरा तो ये थिक है, पर थिक सिर्फ कॉर्नर के ऊपर है। The third step is known as thick at the corners। Clear? तीसरा वाला देखो, they are thick throughout, you can say thickest or thick throughout। Okay, because of deposition of lignin। डायग्राम में elongated फाइबर लाइक है, जैसे फाइबर जैसे लंबे होते हैं, पर इनकी जो सेल वॉल है वो पूरी तरह से थिक हो जाती है। तो यहाँ पे थिकनेस दोनों तरफ है, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे और यहाँ पे there is no thickness, so thin wall, thick at corners and thick throughout। See, if I take my marker, ये single layer, तो ये somewhat you can see this one, okay, round और they are thin wall। अब इसी में मैं कॉर्नर पे उसको थिकनेस करूं तो ये बन जाएगा आपका कॉलन। पर स्क्लेरेंकाइमा में क्या, elongated फाइबर लाइक है और ये पूरा थिक होता है, ऐसा कॉर्नर पे थिक नहीं, पूरा का पूरा। मतलब इस डायग्राम में हमें दिखाना है इस फॉर्म में, ये ऐसे हो जाएगा। Can I say it is thin walled? Can I say it is thick at the corners? Can I say thick throughout? तो वही है, तो पूरा थिक है, it is sclerenchyma। कॉर्नर पे तो कोलेंकाइमा, अगर नहीं है तो पैरेंकाइमा। Clear this part? So that is clear with this part all three। अब आता है intercellular spaces। What is the shape majorly? Round, oval।
तो इनके बीच में गैप होगा ही होगा. So they have large intercellular spaces. They are polygonal. तो इनमें बहुत comparatively less intercellular spaces. They are fiber-like, completely thick and much more entangled. So इनमें no intercellular spaces. Again, it is very easy to compare. Okay, large, medium, no. A large, less, and no. Thin wall, thicket corners, thick throughout. Living, dead. Oval, round, polygonal, polygonal, elongated, fiber line. तो 4 पॉइंट तो आ ही गए. ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो 2 लिखना है या 3 लिखना है, तो 3 तो लिख ही पाओगे. अब इस पे फोकस नहीं करते ना प्यार. पूछेंगे क्या? Occurrence and function. So now we study about the first is occurrence. अगर occurrence समझ में आ गया तो function समझ में आता है, function समझ में आ गया तो भी occurrence. तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहला occurrence of the parenchyma cells. What is written over there? They are present in the cortex of the root, stem and leaves. Okay, एक ही word लिखा हुआ है. Found in stem, root, leaves, or etc. It is found in soft part of plants such as cortex of leaf. Underline cortex. Underline ground tissue. उसी के आगे. And underline mesophyll of leaves. चल, तीनों apid parenchyma ही, पर अलग-अलग जगहों पे मिलते हैं. इनके अलग-अलग नाम. Let's explain this in the next week. हो गया क्या?